Hi everyone, Ashish Kyal here. It's fantastic to have you all here, and I'm just checking if you are able to hear me out loud and clear, if you are able to see me, and आप मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे. It's always lovely to have every one of you over here, and it's always fantastic. Very good afternoon. आज जो हम बात करने वाले, this is very important. Why Elliott Wave is must for powerful trading. अगर आपको ट्रेड करना है मार्केट में, तो Elliott Wave is a very powerful method and I'm going to talk about that. But before I talk about that, I just want to ask every one of you, are you liking the morning tweets? Are you liking the levels? And are you liking the short videos which I'm making? If you all are liking those short videos, levels, morning tweets, it's always fantastic कि आप लोगों को पसंद आ रहा है. And it's always amazing. And always glad to know that these videos are making you a better trader because ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. मार्केट में पैसा बने या ना बने, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि एक सिस्टमैटिक वे से मेथड पता होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके एंड टॉक अबाउट द मेथड दैट एक्चुअली वर्क. Today is going to be a very different way. It's going to be about why Elliott wave, what is the difference between Elliott wave, Neo wave, and how you have to prepare for Sutra of waves. Ki what we have to look at when we are looking at Sutra of waves as a program. Sutra of waves का मतलब होता है so मतलब बीज बोना. And as a program, when we look at Sutra of waves, how we have to be prepared for Sutra of waves and how we have to go about it. So I'm going to talk about that. So very quickly, just very simply, there are two ways of as a trader. When you are trading in the market, you need to understand there are two ways that you can approach trading. One is a pure price action. ठीक है, भाव भगवान से pure price action. The other way is forecasting. Now, when I talk about price action का बहुत वेगली लोग यूज करते हैं. प्राइस एक्शन ट्रेडर बिना पता हुए कि क्या होता है प्राइस एक्शन. इट हैज बिकम लाइक अ फैशन फॉर पीपल टू से कि भाई मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं. और अगर आप पूछोगे उसके प्राइस एक्शन के बारे में दो क्वेश्चन पूछ लोगे तो उन्हें पता ही नहीं प्राइस एक्शन होता. पहली चीज, प्राइस एक्शन मीन्स दैट you need to find out where is the supply, which area is the supply. कहां पर लोग बैठे हुए बेचने के लिए, वो आइडेंटिफाई करना है. टू आइडेंटिफाई दैट यू नीड टू कंबाइन दैट विथ वॉल्यूम प्राइस एक्शन कि भाई कहां पर बड़े प्लेयर्स बैठे हुए माल बेचने के लिए. दैट शोज मी द बिगर एरिया ऑफ सप्लाई फ्रॉम बिग प्लेयर्स, रिटेलर्स नहीं, बिग प्लेयर्स. वेयर इज द डिमांड? First, then we identify where is the demand zone. So you need to look at a chart, plot volume profile on the right hand side, not bottom. And you will come to know where is the demand zone, कि कहां पर demand यहां पर बना हुआ है. Once you have the supply zone ready and the demand zone ready, you know that this is the zone within which markets are possibly going to trade. If there is a price acceptance above the zone, मतलब अगर प्राइसेस जो रेंज में ट्रेड हो रही है, अगर acceptance, what is acceptance? If say for example Nifty goes towards any specific level, or for example a stock goes towards 100 level, वहां से ब्रेक ही नहीं कर रहा था, नाउ 101 पे ट्रेड होना शुरू हो गया. दैट इज एन एक्सेप्टेंस. मतलब 100 पे जाता था, नीचे आता, 100 पे जाता, नीचे आता. दैट इज रिजेक्शन. From that 100 level, there is a rejection. Now an acceptance about that 100 level, which was this level, and now it's trading here, which means there is now a acceptance as per price action, and that shows that कि यहां पर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि बिग प्लेयर्स की जो हर्डल थी वो अभी हट चुकी है एंड उसके ऊपर प्राइसेस ट्रेड हो रहा है. This is the simplest way in which price action can be put across. Then you see some patterns like head and shoulder, inverted head and shoulder, double bottom, double top. ये सारी price action techniques है, ये सब price action में आता है. We plot volume profile. अगर आपने options मंत्रा किया होगा, you have learned detailed way of volume profiling. When you look at volume profile, you come to know कि कहां पर maximum volume बना हुआ है. The area where there is maximum volume is the area where big players have created position. Then we look at open interest profile. What is open interest profile?
Can someone tell me? अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल आप लोग जानते हैं, देखते हैं, आई एम जस्ट आस्किंग यू ऑल, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल? The area where big players are selling call or a put option. And where is this open interest profile is the area where the big players are selling call or put option. These are all price action data points. एंड जहां पर बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन सेल कर रखी है, अगर उन्होंने कॉल सेल कर रखा है तो मतलब मार्केट ऊपर जाना मुश्किल है। अगर उन्होंने पुट बेच रखा है मतलब नीचे जाना मुश्किल है, वो सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट करता है। ओपन इंटरेस्ट कैन चेंज वेरी फास्ट, वेरी क्विकली, बट यू हैव टू कंबाइन दैट। So these are the simple ways in which you can look at price action. Now comes the other part of it, which is forecasting. Forecasting का मतलब होता है we are trying to see what lies in the future. Future means यहां से कल क्या होने वाला, the very next day, the very next hour, the very next week, next month या next year. How is prices going to go? What is the forecasting suggesting? To forecast, either you should know the patterns, और लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो प्राइस एक्शन पैटर्न है उसका फोरकास्ट आता है प्रोजेक्टेड अपसाइड, विड्थ ऑफ द हेड, प्रोजेक्टेड अपसाइड, बस उतना, उसके आगे क्या पता नहीं। उसके आगे वाली चीज जो फोरकास्टिंग पे पता चलती है वो है एलियट वेव। ना एलियट वेव से पता चलता है कि भाई अगर प्राइसेस इस लेवल से इस लेवल तक जाएगा, then from there we can start seeing a correction, maybe in the form of wave 4, then we will see in the form of wave 5, and after 5 we should see an ABC correction, and then we should start the third wave on the upside. So in a nutshell, you can do this forecasting not only for next day, next hour, or next year, but you can do it for 10 years or 100 years of data. वो फोरकास्टिंग करना पॉसिबल है। अभी 100 इयर्स का फोरकास्टिंग करने के लिए मेरे पास पास्ट डेटा भी 100 इयर्स का होना चाहिए, विच इज अवेलेबल फॉर S&P 500 या डाउ जोन्स में। एंड यहां पर व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, एंड ओवरऑल व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, द जो पास्ट डेटा आपके पास में है, जो 100 इयर्स का डेटा है, उसके बेसिस पे आप फोरकास्ट, लेकिन 100 इयर्स का आप फोरकास्ट करने का कोई पॉइंट है क्या, मैं पूछना चाहता हूं। इट्स पॉइंटलेस. You and I are anyways not going to enjoy that fruits. So it's prudent to apply Elliott Wave on the daily time frame chart, weekly, daily, hourly, 5 minutes. Now, if you are a scalper or an intraday trader, you can apply this on a 5 minutes time frame chart. 15 minutes, 5 minutes पे apply कर सकते हो। मैंने एक रिसर्च भी बनाई थी। Directly forecast करना। Now, Elliott Wave है क्या चीज? You can apply on 5, you can apply on hourly if you are a positional trader. You can apply on daily if you are someone who is looking for trading for a month or something like that. Now, इसमें है क्या? इसमें overall, how do you have to look at it? Now, when you are looking at the entire forecasting of the market using Elliott Wave, okay? Okay, when you are looking at it, fantastic to have you also here. When you are looking at it, when you are looking at the entire Elliott wave pattern, what you have to understand, R.N. Elliott, in the age of 65, when he was 65 years of age, he invented a method which is known as Elliott waves. Okay, these Elliott wave method, which was invented by him at the age of 65, he R.N. Elliott, उनके नाम से ही हम Elliott wave कहते हैं. He was accountant all his life and he said नहीं, it is possible to look at stock market and possible to forecast the economy. क्योंकि भाव भगवान છે. Price is God, that is what you have to understand very, very clearly. Now, he said that everything moves in the steps of 5. 5 steps forward. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 steps forward and 3 steps backward. A, B, and C. 5 steps forward जाता है, 3 steps backward जाता है. 5 steps forward, 3 steps backward. That's what he said. If I know that I'm in the third step, I know how far I have to go. So Elliott wave gives that forecasting ability, and it's a very amazing way. Suppose if you are creating a building and you have a blueprint, एक architect होता है जो पहले blueprint को ready करता है. Once you have the blueprint, then you start construction about the building and see if it is how you have expected it to do. Same thing. Elliott wave is blueprint of stock market.
It can be applied on stocks, commodities, forex. It can be applied on hourly chart, as वो पहले मैंने आपको बताया. It is the blueprint of stock market. Once the blueprint is ready, अगर आप देखा होगा, आपने बुर्ज खलीफा जाके देखा होगा या टीवी पे देखा होगा, जब वो बना था तो क्या ऐसे ही जाके बिना कुछ किए बना दिया था? नहीं. फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट गेट द ब्लूप्रिंट रेडी, गेट एवरीथिंग इन प्लेस बेसिस ऑफ द रूल्स. रूल्स होते हैं ना, उसके भी रूल्स के बेसिस पे वो रेडी किया प्लान, सारी चीजें चेक की, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू की. वही चीज मार्केट में, वही चीज एलियट वेव में. एलियट वेव बताएगा कि इस तरीके से ऐसे ऐसे जाना चाहिए, वहां से नीचे आना चाहिए, यहां से ऐसे जाना चाहिए. यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकता है. हम मार्केट को नहीं बता रहे उसे क्या करना है. भाव भगवान से मींस प्राइस इज गॉड. वी आर नॉट टेलिंग व्हाट मार्केट हैज टू डू. वी आर ओनली ट्राइंग टू गेज व्हाट मार्केट कैन पॉसिबली डू. This is how it can happen. And that is what we do. It is like a GPS also. It gives you the address of a stock market. Address. अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है और आपके पास में Google Maps नहीं है, GPS नहीं है, can I say there will be lot of problem, lot of issues, anxiety, बहुत सारी चीजें होगी. लेकिन अगर आपके पास Google Maps है, you know tentative timeline, you know tentative route, you know how you are going to go, you can plan out things. Exactly that way, wave theory is the GPS of stock market. Now I know this is how price can possibly behave. I can plan my trades. My option trade for expiry day क्या होना चाहिए? क्या मैं ऑप्शन सेल करूं? क्योंकि अगर समझो 5 waves में wave 4 यूजुअली ट्राइंगल बनाता है. आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट. If you know next 2 days market is going to be in a range, is that a useful information? I want everyone to participate and write it down on the chat. अगर मुझे पता है that यहां पर मार्केट रेंज में रहने वाला है, 2 दिन मार्केट रेंज में रहेगा, that is a useful information. Of course, basis of that range, you can then form an option strategy by selling call, selling put, IB crash होगा, रेंज में जाएगा. If I know that post that range bound movement, after that range bound in the 4th wave, there is going to be a 5th wave thrust on the upside. Can I trade that by buying a call option and selling out of the money call option? Bull call spread बनाएंगे. After that, I know there is a correction in the form of A, B, C. 5 complete हुआ, correction आएगा A, B और C में. So can I trade that? और फीबो लगा दिया वहां पर हमने, फिबोनेसी लगा दिया कि भाई अगर ये वेव 2 है बड़ा वाला, ये 61.8 के नीचे नहीं जाएगा, तो मुझे पता है मैक्सिमम लेवल इतना ही जाने वाला है. With this as the GPS and with this as an information, can I say that this is going to be a very, very vital way in which I can now trade without anxiety, without fear, without worrying how I have to go about it. That's what is Elliott Wave doing. And the third wave is one of the fastest, smartest, quickest wave, which covers 1.618 or 2.618 Fibonacci of wave 1. Now, if you are able to identify this one wave of wave 3, आपका एम एक ही है एज अ ट्रेडर. आप खाली इंडेक्स ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप खाली ऑप्शन ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर रहे हो. Now, if that is the case, and if your only aim is to identify this third wave stocks, where it's going to start, and you enter right with a small risk and a good reward, you are able to forecast. लेकिन हम खाली ये रिस्क रिवॉर्ड पे एंटर नहीं कर रहे, हम वेव थियरी के बेसिस पे नहीं कर रहे, हम प्राइस एक्शन को कंबाइन कर रहे हैं. प्राइस एक्शन बता रहा है मुझे कि यहां से रिवर्सल हुआ, 1 आवर कैंडल, 3 कैंडलस्टिक रूल हो गया, या इचिमोको क्लाउड आप अप्लाई कर रहे हो, एंड वहां से आपने थर्ड वेव कैच किया एंड 1.618 प्रोजेक्ट किया, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े रिवॉर्ड का ट्रेड सेटअप आपको मिल गया. नाउ एज आई सेड, अगर आपने देखा होगा, many people never expected markets to go from this level to that level, अगर bullish ऐसे, but you see how it behaved precisely as per the movement that was expected. Even on the bearish move, you can forecast that कि भाई इस लेवल पे यहां से 6 महीने का करेक्शन आएगा. अब ये जो 6 महीने का करेक्शन है, क्यों आएगा, कैसे पता चला? That is
नियो वेव। डिफरेंस क्या है एलियट वेव और नियो वेव में? Elliott wave is the GPS of the market, which talks about three rules to define an impulse pattern. एक पैटर्न है 5 years फॉरवर्ड में, तीन रूल होते हैं उसके। करेक्टिव पैटर्न में जिगजैग, फ्लैट, ट्रायंगल होते हैं। इतना है कॉम्बिनेशन पैटर्न। ये एलियट वेव। Glenn Neely, in the year 1970s, he Glenn Neely in the year 1970s, he then forecasted market basis of neo wave technique, which is known as Neely wave or neo wave, NEO. And he said, जब आर एन एलियट ने एलियट वेव बनाया था, वो बहुत साल हो गए, 1930s के आसपास बनाया था, we need some refinement and improvement on the method that he talked about. And so he came out with a concept known as neo wave or a Neely wave. Now, this pattern, he found some new patterns, not only flat, zigzag, triangle. There are diametric patterns. मतलब it's like a contraction and an expansion. मतलब पहले contract हुआ फिर expand हुआ. That is a pattern. He came out with a pattern known as extracting triangle pattern. That's another pattern. He said, I also applied the concept of time rule, basis of which we can say with very high probability market ने low बना दिया. And that is the probabilities which I used to forecast the market way in April when no one was expecting it. I said it's forming a low. And that's the probability earlier when no one was expecting it's forming a top. I mentioned नहीं भाई अक्टूबर में टॉप बनने वाला है, मार्केट में टॉप बना. So point ये है, if you check, go back and check the past years. Point ये है, basis of this concept, you are able to make a very decisive mood of the market. So it measures the social mood of the market कि भाई overall market का mood क्या है. कहते हैं ना यार, आज सुबह उठे, आज तो यार लग रहा है बेचना पड़ेगा, मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, बाय करके बेच के बनाएंगे. ये सोशल मूड है. ये खाली आप ड्राइव नहीं करते हो. दिस सोशल मूड इज नॉट ड्रीवन consciously, it's driven subconsciously. Collectively as a crowd, we are responsible for the market trend. Collectively as a crowd, when the सोच सबकी बदल जाती है एक साथ, तब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है. एंड वो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट जीपीएस या स्टेटिस्कोप, हार्ट बीट मेजर करने का, इज वेव थियरी. So neo wave is all about how this wave theory can be elaborated with more rules, more patterns, and it helps to understand what's going to happen next. That's forecasting. And when you combine, so forecasting में बहुत powerful method है, लेकिन we need to keep checking with the blueprint. जो blueprint मैंने lay down किया है, इस तरीके से जाएगा, 1 2 3 4 5. क्या मार्केट उस तरीके से मूवमेंट हुआ? नहीं हुआ तो गड़बड़ मार्केट में नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना. गड़बड़ आपके वेव अजम्पशन में. ये अज्यूम किया ना मैंने कि ये पैटर्न बनना चाहिए, ट्रायंगल पैटर्न बनना चाहिए, अज्यूम किया और उसके बेसिस पे ट्रेड लिया. लेकिन अगर समझो कोई और पैटर्न, मार्केट का मूड कुछ और है यार, कुछ और बनाया, तो हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे छोटा स्टॉप लेके निकल जाएंगे. लेकिन अगर सही गया तो वी नीड टू एंश्योर वी मेक अ लॉट मोर. ओके, आर यू विथ मी? सो एंड एवरी वन ऑफ यू, ये बहुत ही सिंपल वे से देखना है, बहुत ही सिंपल वे से सीखना है. सो मैं पूछना चाहता हूं यहां पर जो भी लोग जुड़े हैं, देखिए वेव थियरी में टू स्टेज कंफर्मेशन टेक्निक क्या होता है. टू स्टेज कंफर्मेशन टेक्निक में होता है व्हेन देयर इज अ फॉल. ओके, से फॉर एग्जांपल निफ्टी स्टॉक लेता हूं मैं, स्टॉक वेंट फ्रॉम 100 to 97, ₹3 का फॉल आया, विच टुक अप्रोक्सीमेटली 1 day or 5-6 hours. Now, that stock in less than 6 hours retraced back the entire fall. नीचे ₹3 आया, पूरा पूरा फॉल जो था रिट्रेस कर दिया फास्टर टाइम में. देन आई कैन से दैट द फॉल इज रिट्रेस बैक इन फास्टर टाइम. तो फॉल को इतना टाइम लगा और रिट्रेसमेंट इतना फास्ट हो गया, which means something has changed, which means a low has formed, which means change your stand. You should be very quick to change your stand with a blink of an eye. भाव भगवान से प्राइस एक्शन चेंज,
मेथड सजेस्टेड समथिंग एल्स इज हैपनिंग, शार्प रैली हो गई वॉल्यूम के साथ, मतलब मेरा बेरी स्टैंड रॉन्ग है, काटो पोजीशन, स्टैंड चेंज्ड. This is how you have to do that. This is how you have to look at it. This is how you have to trade markets. And Elliott Wave gives you precisely that. If you are someone who is trading in options and trying to figure out यार समझ में नहीं आ रहा है, पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं वेव पैटर्न क्या है, वेव एक्सपेक्टेशन क्या है. अगर आपको पता है कि ट्रेंड जा रहा है फिफ्थ वेव में, मोमेंटम कम है, डाइवर्जेंस है, बुल कॉल स्प्रेड चलेगा या पुट बेचना चलेगा. लेकिन आपको पता है थर्ड वेव चल रहा है यार, कॉल बुल कॉल बनाऊं क्यों, मैं तो खाली कॉल बाय करूंगा या फ्यूचर्स बाय करूंगा. अगर मुझे पता है वेव टू चल रहा तो मैं डायरेक्टली जाके नीचे जब आया और रिवर्सल हुआ वहीं एंटर करूंगा. इफ आई नो दैट देयर इज गोइंग टू बी अ वेव फोर फॉर्मेशन व्हिच इज गोइंग टू बी अ ट्रायंगल पैटर्न, कॉल और पुट दोनों बेच दूंगा. So now what I am saying is you are not trying to hit a sixer by buying a naked call or future on every ball. What you are trying to do? You are simply trying to hit a sixer not at every ball, but simply taking those ones and twos when the ball is not right. That's the beauty of wave theory. And you should know that. क्योंकि अगर आप वेव थियरी सीखते हो, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं कर सकता हूं. देखिए दोस्तों, 2007 में लीमन ब्रदर्स में जॉब करता हूं. 2007 आई वाज वर्किंग विद लीमन ब्रदर्स यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक, अगर आपको पता नहीं होगा. एंड देयर वाज सब प्राइम क्राइसिस. 2008 में क्राइसिस आया, लॉस्ट माय जॉब. 2008 में लॉस्ट माय जॉब, नॉट बिकॉज उन्होंने मुझे निकाल दिया, कंपनी ही बंद हो गई. US investment bank, they shut down because they went into crisis. Stock market crash, lot of things happened, and I lost my job. I realized, यार मतलब जॉब है, US investment bank, what can possibly go wrong? And everything that can go wrong went wrong. Can you imagine that? That is why it is very, very important for you to understand this simply. It's important to have that passive source of income. It's important to have that parallel source of income. कि भाई money is working for you. You are working for money, वो तो एक part है. Maybe you don't want to, but एक part है. But then how you take care and manage that money starts working for you. That's when you achieve financial freedom. I don't have to work just because यार forcefully करो. No, I'm passionate about it. I'm passionate about trading. I've been trading for 2 decades successfully since 15 years. I'm passionate about each and everything that I see, I learn, and I keep learning. Market keeps teaching you every other day. I'm passionate about teaching. I'm passionate about trading. And that's what I'm doing. If I wouldn't have done my CMT, I cleared all the 3 levels of CMT in just 1 year of time. And तीनों लेवल एक साल में क्लियर किया, 2007 to 2008, which takes 3 years. Just because यार करना था, अंदर से जो आग होती है ना वो होनी चाहिए, करना है. I'm an engineer. You know, when I lost my job, I went for interviews and I wanted to be a trader, technical analyst, all of those. कोई नौकरी देने रेडी नहीं था because the HR will not call me since I have no experience with that. I have experience on the risk. I worked with investment bank. I worked in the US, in the UK, but I was a fresher on technical analysis. And 2007 की बात कर रहा हूँ, 2008 की. No one was ready to give me a job. ढूंढा, मिला नहीं, मिला तो कुछ मिला नहीं. So I said यार बस हो गया, खुद का कुछ करना. Then I started writing, penning down my research, penning down my thoughts. I started trading. I said यार अगर मैं ट्रेडर, अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अच्छा तो पैसा भी तो बनना चाहिए. खाली रिसर्च करके क्या करेंगे, पैसा बनना चाहिए. So I started penning down, I started writing down, I started trading using my research, I started improvising, I started combining time cycles along with that, and then things changed. I learned wave theory, I learned neo wave, I applied time cycles, I started trading options. बहुत सारी चीजें की, बहुत एक्सपेरिमेंट किया, बहुत कुछ ऊपर नीचे देखा. Finally found what works in the market. And the process is simple. Whether you learn wave theory, you learn technical analysis, you trade options, you don't trade options. One process is simple. Respect prices. Never fight the trend. Trend is your friend. And when you lose, ensure you are losing less. And when you are making, ensure you make a killing. Then it works for you. छोटा 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 लॉस करो, लेकिन अगर एक ट्रेड सही मिल गया
उसे पूरा राइड करो। साइकोलॉजी अलग है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कीप टेलिंग माय मेंटीज आल्सो, मास्टर पार्टिसिपेंट, सेम थिंग। जब लॉस हो रहा है ना तो रुक जाते हैं यार, होप पे। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जो लोग यहां पर है, बहुत ही क्लियरली, ऐसा हुआ है आपके साथ यार, लॉस हो रहा है, रुकते, होप पे? ऑनेस्ट है ना, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, नॉट विथ मी, आई एम जस्ट अ मेंटर, बट जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि लॉस हो रहा है तो रुक जाते, देखते देखते, और उतने में एक्सपायरी आ जाती है और ऑप्शन वैल्यू जीरो, ऑप्शन वैल्यू जीरो। एंड फिर सेकेंड टाइम वैसे ही किया, थर्ड टाइम सही ट्रेड है, हिम्मत नहीं हुई। थर्ड टाइम में पता है यार ये ऐसा करने वाला है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लग रहा है, फियर हो रहा है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कोई पता नहीं रहा यार ये सही कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं, पता नहीं है। दैट्स व्हाई, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ प्रोसेस, एंड इफ यू हैव अ प्रोसेस यू डू नॉट हैव अ ट्रस्ट। If you have a trust, you do not have someone to ensure you are doing it in the right way. And that is what it takes. It's very crucial. When you're losing, get out. When you're, मतलब होता है ना कि यार when in doubt, get out. बहुत क्लासिक सेइंग है ये सब, वॉल स्ट्रीट एडेज की बहुत सुपर्ब सेइंग है, when in doubt, get out. सोचना ही नहीं है यार, ठीक है ना, पैसा है, नुकसान थोड़ा होगा, लेकिन नुकसान अगर बड़ा किया तो रिकवरी करना मुश्किल है। कैपिटल इंटैक्ट रखना टॉप प्रायोरिटी, मैनेज करना टॉप प्रायोरिटी। सो व्हाट डज वेव थ्योरी हेल्प अस टू डू? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, क्राउड क्या सोच रहा है। इट हेल्प्स अस टू गेट लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड सेटअप। It tells me where to place my stop loss when I can go wrong. It tells me where to take away my profits, what can change. And it gives me the alternate scenarios. This is my preferred scenario. This is my alternate scenario. Now I combine my price action technique of option open interest profile, combining with volume profile, combining what we did in options mantra all together, and you are into a complete different world now. And that's what we do in Sutra of Waves. Sutra of Waves, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, it's about learning the science of trading Elliott Wave using a simple steps and then combining it together. This Sutra of Waves program, it's a 2 days program in which is going to be about how you have to look at the market combining with wave theory. लेकिन सूत्र ऑफ वेव्स के पहले ही मैं आपको एलियट वेव का वीडियोस देता। सूत्र ऑफ वेव्स इज अबाउट नियो वेव। एलियट वेव का वीडियो इसलिए दिया जाता है कि आप आने के पहले थोड़ा सा देख के आए। व्हेन यू कम, व्हेन यू सी दोज वीडियोस, यू हैव सम टर्मिनोलॉजी रजिस्टर्ड इन योर माइंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं सीखता था ना, मैं इंजीनियरिंग करता था और कोई साइंस टीचर मुझे सिखाता था, तो मैं सोचता रहता था, दिस इज मी, यार ये अगर ऐसा सिखा रहा है और मुझे समझने में इतनी दिक्कत हो रही है, क्या मैं इसे इम्प्रोवाइज कर सकता हूं? कैन आई मेक इट मच बेटर? व्हेन आई वाज लर्निंग मैथमेटिक्स, व्हेन आई वाज लर्निंग साइंस, व्हेन आई टीच माय किड्स, कैन आई मेक इट मच बेटर? And that's what I'm doing, not now. I've been doing it since years and years, not only engineering. In my 12th, when I was preparing for science, preparing for this thing, how can it make it better? Someone is teaching me, I'm learning from that, but it's not easy. How can I make it better? So I decided to myself, when I lost my job, if I do something in life, I wrote a book. That's the book which you can see. लिखी है मैंने, वर्ल्ड वाइड पब्लिश हुई है दोस्तों, ये बुक लिखी है मैंने। इफ आई डू समथिंग इन लाइफ, आई विल राइट अ बुक। ये लिखी है मैंने इसलिए, so that I can explain it in simple ways in which people can understand as a trader's mindset, not as an academician. I'm not an academician, I'm a trader. As a trader, what can I write? I have written that. Then when I teach as a trader, what are the challenges I face? यार मैं खरीदता हूं, मार्केट नीचे चला जाता है, मैं लेता हूं, ऐसा लग रहा है कोई माइक्रोस्कोप नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके मेरा ही ट्रेड देख रहा है, और जैसे ही मैं एंटर करता हूं, चेंज। यार इतने दिन से व्यू बना रहा था कि मार्केट में बाय करूंगा, जैसे ही एंटर किया निफ्टी नीचे 100 पॉइंट। ऐसा क्यों? ये आपके साथ नहीं होता है, सभी के साथ होता है, बिकॉज यू नीड अ मेथड, you need a process, and you need someone to tell you whether the method is right or not. That is what this Trishul program is all about. Trishul is
त्रिशूल, जो शंकर भगवान का त्रिशूल होता है, इट्स थ्री, थ्री मीन्स ऑप्शंस, ऑप्शंस मंत्र ओम, इसलिए नाम भी वैसे ही रखे, ऑप्शंस मंत्र इज ओम. सेकेंड इज एलियट वेव. थर्ड इज सूत्र ऑफ वेव्स. सूत्र ऑफ वेव्स इज सो, बीज बोते हैं नाम. And combined together, these three is known as Trishul program. I'm asking how many of you are here who are with me for the Trishul program or who wants to be with me for Trishul or Sutra Waves program. यहाँ पे लिंक भी शेयर करेंगे आपके साथ में त्रिशूल का. You can be a part of Sutra Waves or you can be a part of Trishul program and it's going to be an amazing learning. It's going to be learning, investment in yourself. अगर मैंने 2007-8 में CMT नहीं किया होता, सीखा नहीं होता, I wouldn't have been here. You can see me on CNBC Awaaz also, खिलाड़ी नंबर 1 show. I won many times. Many times. काउंट्स रखना ही भूल गया अभी तो मैं. 30, 35, 40 कितने टाइम्स जीता हूं. So it's possible if I can win that many times on a national channel. अगर मैं कर सकता हूं दोस्तों, तो आप तो कर ही सकते हो. Or not because only I am saying. There have been so many of them who have been talking about it and who have been already doing it. I can share across on my PPT कैसे लोग कर रहे, कैसे वो देख रहे मार्केट को बहुत ही सिंपल वे से, और वो खुद कर पा रहे. मैं ओपन करूंगा आपके सामने. बिफोर आई डू दैट, आई जस्ट वांट टू आस्क हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर ऑलरेडी. और जो है यहाँ पे लिखते जाइए ना, कौन कौन है. सतीश है, आलोक है, विपुल है, शुभम है, ये सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी दे आर the traders who have taken that step forward and they have been trading in the market and they are seeing the power of wave theory. They are witnessing it through the levels, maybe through the videos, what I do. ये सारी चीजें देख रहे हो and it is working for them. If it is working for them, don't you think it will work for you? अगर उनके लिए काम करेगा दोस्तों, तो आपके लिए नहीं करेगा. साइंस है ना यार ये. लुक एट इट लाइक अ फिजिक्स. आई एम एन इंजीनियर, मेरे को ये सारी चीजें पसंद है. It's like a physics, but probability. It's a science of probability. Science of probability क्या होती है मालूम है? Science of probability होती है कि अगर आपने इस तरीके से ऐसे ऐसा किया तो 70% चांस से ऐसा होगा, या 80% चांस से ऐसा होगा. That is a science of probability. एंड फिजिक्स का भी वही लॉजिक है कि ये इनपुट डाला, फिजिक्स मोर सर्टेनिटी पे, ये स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी पे. अभी डर क्यों लगता है लोगों को? और क्योंकि उनके पास में जीपीएस नहीं है, इसलिए डर लगता है. दूसरा चीज, उनके पास में अगर जीपीएस है तो उनके पास में मेथड नहीं है कि भाई ये राइट कर रही कि नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मेरा पीपीटी आपके सामने रखता हूं just to show you. It's not only me. There are people and traders who are able to do it. Just to showcase. मैं तो कर रहा हूं, आप लोग भी कर सकते हो. ओके. एंड शिक्षा है यहाँ पर आपको, my team. So look at it. Ritu, she has been there and she has mentioned. Thank you, Ashish Kyal ji, for exceptional mentorship and sincere efforts. Mentorship is all about त्रिशूल प्लस काल चक्र टाइम साइकिल्स प्लस मेंटरशिप सेशंस. उसके बारे में उन्होंने लिखा है. शी हैज मेंशन्ड दैट. शशि ने लिखा है, थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल. आकाश ने लिखा है, सर एक्सेप्शनल स्टैंडर्ड, डीपली अप्रिशिएट द नॉलेज गेन्ड. सीखा है यार लोगों ने. पैसा तो कमाना ही है लेकिन सीखा है. आनंद है जो चेंबूर से, उन्होंने शेयर किया. सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट इज वर्किंग फॉर देम. दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू अक्रॉस. उनके लिए भी काम कर रहा है दोस्तों यहाँ पे. ओके. I can do a trading fearless today, gain of 41,000 in one day. My lifetime record उन्होंने लिखा है. fearless बनना है. ट्रेड करने से डर नहीं लगना चाहिए दोस्तों. It has very very crucial. You can do that. आशिमा ने लिखा है, sir good day, magic of following your levels and the methods, and they are able to do it. They are able to do it. अनिल कुमार ने लिखा है, सर हियर आई गो माय स्नैपशॉट पोस्ट लर्निंग एलियट वेव टाइम साइकिल प्राइस एक्शन. भाव भगवान छे, ट्रेडर पहलवान छे, उन्होंने मेंशन किया. निखिल मेंशन करे फाइनली प्रॉफिट इन ग्रीन. सो राजेश कन्नर, ऑसम एलियट वेव एंड आई एम अ कॉन्फिडेंट ट्रेडर यूजिंग एलियट वेव. मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं. दिस पीपल आर यूजिंग वेव थियरी, एलियट वेव. सौरभ पाटिल लिखे, सर आई मेड 3.99 lakh profits thanks for Kal Chakra and Trishul program. So they invested. Rachna Namade, Neeraj Malik, she mentioned Rachna Namade हमारे ब्रह्मास्त्र में है.
Menti है, Brahmi है. She mentions a 202% profit on capital in Nifty options in a month. Only intraday trades. Only intraday trades 202%. Is it possible for everyone? क्या लॉस नहीं होता है? होता है. लेकिन ये क्या करते, जब लॉस हो रहा है तो छोटा कर रहे, निकल जा रहे, लेकिन जब बन रहा है तो ज्यादा बना रहे. सो हमारा जो प्रोग्राम है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र, यू कैन बी पार्ट ऑफ त्रिशूल, विच इज गोइंग टू बी देयर. द प्राइसिंग एंड द डिटेल्स आर हियर. द डायरेक्टर साहब सभी के साथ लिंक शेयर करिए इफ यू आर willing to be a part of it, because all of you are here with me listening me. I am open to offer you the pricing which I was offering earlier, which is no longer valid, but मैं आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि आप आज यहां पर हो एंड यहां पर क्लियरली. सो त्रिशूल यहां पर आप देख सकते हो, एवरी वन ऑफ यू, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग. सो यहां पर आप देखिए, you can be a part of it and I'm open for questions. It's going to be amazing. शुभम अग्रवाल, आप तो हमारे ऑलरेडी मेंटरशिप के पार्ट हो. ही सेइंग सर व्हेन वी कैन आल्सो डू इट व्हेन वी हैव सच अ ग्रेट मेंटर. एब्सोल्युटली, कोई डाउट ही नहीं है. आलोक रंजन, बिल्कुल. जो अभी इसमें क्या सीखेंगे मैं फिर बता रहा हूं आपको. यहां पर मैं लेके चलता हूं आपको मेरे स्क्रीन पे, जहां आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी जस्ट. और यहां पर क्या क्या सीखेंगे आप, मैं आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूं. त्रिशूल मेंबरशिप क्या है? त्रिशूल मेंबरशिप में ऑप्शंस मंत्रा है, एलियट वेव है और सूत्र ऑफ वेव्स है. आपको ऑप्शंस मंत्रा के वीडियोस यहां पर मिल जाएं, जहां पर 12 घंटे की ट्रेनिंग है, जिसके वीडियोस है आपके साथ में, वो ऑप्शंस मंत्र में मिलेंगे, वेर यू लर्न अबाउट प्राइस एक्शन मेथड्स विच आई टॉक्ड अबाउट टू यू ऑलरेडी. ओके, ठीक है. जिसके अंदर आप ओपन ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीजें जो सीखेंगे वो इस प्रोग्राम में सीखेंगे. प्लीज कीप दैट इन माइंड, विच इज ऑप्शंस मंत्र. यहां पर मैं आपको वही दिखा रहा हूं. जस्ट अ सेकेंड, ये मेरा पेन रहा. हाँ, यहां पर, अरे यार, I'm just going to click on the pen. In this options mantra, you will be learning about open interest profile, volume profile, वो सीखेंगे. ऑप्शन स्ट्रैटेजी कैसे होती है, और बहुत पावरफुल केएसटी केल्टनर चैनल ब्रेकआउट मेथड. ये वीडियोस है जो आपको अभी रजिस्टर करने पे तुरंत मिल जाएगा. यू विल गेट सेकेंड वीडियो विच इज अबाउट एलियट वेव, ठीक है, त्रिशूल मेंबरशिप के अंदर. तीसरी चीज जो सूत्र ऑफ वेव्स है, उसकी लाइव सेशंस होगी, which is going to be on the weekend 10 to 4. लाइव सेशंस के साथ ये सभी के रिकॉर्डिंग, अगर आप त्रिशूल मेंबरशिप ले रहे हो, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. प्लस in Trishul, what you learn is Sutra Waves. In Sutra Waves, what you learn in this program is complete science of Neo Wave plus Ichimoku Cloud. फिबोनेसी इचिमोको क्लाउड इज अ वेरी पावरफुल मेथड जो आपको सीखना ही चाहिए. प्लस फिबोनेसी मेथड, टू स्टेज कंफर्मेशन टेक्निक्स एंड पैटर्न्स. ये सीखने के साथ आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी 3 महीने के लिए रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएगी. सो यू डोंट हैव टू वरी. फिर दूसरा आता है, यार मैं सीख तो लूंगा लेकिन हैंड होल्डिंग कैसे होगी? यू विल गेट एक्सेस टू ट्रेडर्स कम्युनिटी ऑल्सो. Once you get access to traders community, you will be able to then post your queries, doubts, charts, everything. It's going to be there. Okay, this is going to that. Plus you will get access into 51 rupees जो आपको भरना होगा अलग से फॉर मेंबरशिप. मेंबरशिप, त्रिशूल मेंबरशिप की जो प्राइसिंग है वो 2,17,000 आप देख रहे हो. बट वी आर गिविंग दैट मेंबरशिप which includes all of these things. A membership will include 3 months of Nifty research, plus it will include 3 months of AK indicator, जो एक्सेस आपको आज मिलेगा. प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू, इसके लिए लेकिन 251 अलग भरना है क्योंकि एडवाइजरी इज डिफरेंट देन लर्निंग. सो दिस इज प्योर लर्निंग एंड दैट इज एडवाइजरी. Plus, you will be also getting access to a very powerful course which is known as Bollinger Band and KST method. And someone, if you are a fresher, I'm also going to give you 12 hours of Master of Technical Analysis course. Mota bolte, Mota bhai. Mota means bada. That is going to be given, which is of 12 hours video also. So ये भी आपको मैं दूंगा, ये भी आपको दूंगा. So if you are someone who is registering
Now, you can also block your seat by paying a 10K token amount and block your seat now. ये प्राइसिंग आपको कल नहीं मिलेगी, बाद में भी नहीं मिलेगी। अगर प्राइसिंग मिल गई तो बोनसेस तो नहीं मिलेंगे। इसके साथ मैं आपको 10 बोनस वीडियोस दे रहा हूं फॉर लाइफ टाइम। बोनस वीडियोस लाइफ टाइम के लिए आपके, जो आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस टू ट्रेडर्स कम्युनिटी आपके पास रहेगा। ये वीडियोस आपके पास 3 मंथ्स के लिए, ये सारी चीजें आपको है। एंड यू हैव टू बी बट अ पार्ट ऑफ इट। Unless you are a part of it, you have to invest in knowledge. It is like learning and it's a science. आप 10K पे करके विद इन 24-48 आवर्स बैलेंस अमाउंट EMI में भी पे कर सकते हो। ओके, नाउ व्हेन यू गो ऑन द लिंक, there are questions. I'm going to answer the questions. Are you able to see my screen here, every one of you? Yes, this program is this weekend. It's going to be on 6th and 7th of December this weekend. अगर आप अवेलेबल नहीं हो, 10 to 4 है। अवेलेबल नहीं हो तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और यहां पर हम लिमिटेड सीट इसलिए लेते हैं बिकॉज आई वांट टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन एवरीवन इज आस्किंग। दिस विल बी ऑन हिस्टोरिकल चार्ट्स। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। हम हिस्टोरिकल चार्ट्स देखेंगे, हम हिस्टोरिकल लर्निंग्स देखेंगे, हम पास्ट चार्ट पे क्या हुआ था देखेंगे, because we want to do it on historical chart and that way you will learn a lot more. I'm going to answer every question that you might ask. Plus, क्या मैं नेक्स्ट डे से वेव थियरी अप्लाई करके पैसा कमाऊंगा? नो। नेक्स्ट डे से आपको वेव थियरी प्रैक्टिस करके चार्ट शेयर करना है ट्रेडर्स कम्युनिटी पे, जिसका एक्सेस दिया जाएगा। नेक्स्ट डे से यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव लर्न्ड इन त्रिशूल प्रोग्राम ऑफ ऑप्शंस, जो यहां पर लिखा है, विच यू कैन इमीडिएटली अप्लाई नेक्स्ट डे। That is possible. Wave theory will take time. It will require hand holding. It will require learning. Hand holding in terms of learning. मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा आपको क्या पे करना है। आपको त्रिशूल करना है कि सूत्र ऑफ वेव्स करना है, वो आपको डिसाइड करना है। सूत्र ऑफ वेव्स खाली करे तो 19,500 प्लस जीएसटी में, त्रिशूल कर रहे 32 प्लस जीएसटी में। और अगर इनकेस देयर इज समवन आस्किंग फॉर ब्रह्मास्त्र अगर आप कर रहे, so you learn Trishul 2 times because you get access now, you get mentorship sessions, you learn about that, you get access to time cycles, you get access to again Trishul program, mentorship sessions होते हैं। So it's a very detailed stock selection, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। ओके, इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हो यहां से। यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन जस्ट सिंपली गो हियर, क्लिक ऑन द लिंक, वहां पर ईएमआई का ऑप्शन आएगा। मैं क्लिक करके आपको बता देता हूं। ईएमआई की लिंक शेयर करिए सभी के साथ में प्लीज। यू कैन गो एंड क्लिक ऑन ईएमआई ऑल्सो एंड यू कैन डू दैट। ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन, सर आई एम अ फ्रेशर, विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम? देखिए, मैं वही बता रहा हूं आपको। मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो जो 10 घंटे का है, पूरा नहीं देखना है, बेसिक समझ के आना है। ठीक है, एलियट वे वीडियोस 6 घंटे का है, 5 घंटे का जो आपको दे रहा हूं, 1 घंटा देख के आना, सो दैट यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। इवन इफ यू आर अ फ्रेशर you will be able to get it. You don't have to worry at all. I will teach you. I will ensure you learn. So कैसे इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में कैसे करना है आपको? You can simply you simply have to go on this page. Just a second. And यहाँ जाना है आपको। 1 second and yeah, okay, मेरा स्क्रीन शेयरिंग चेंज हो गया। यहां पर जाने के बाद में एंड जो जो रजिस्टर करते जा रहे प्लीज एक कंफर्मेशन डालते जाइए। आई कैन सी शीतल हैज रजिस्टर्ड ऑलरेडी, रघुनाथ ने आ चुके हैं, विश्वजीत आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है। ट्रायल कैसे होता है सिखाने में भाई? मेरे को समझा नहीं प्रमोद, ट्रायल क्या होता है इसमें? अगर मैं सिखा रहा हूं तो मैं उसको ट्रायल कैसे दूं? ये आप जो अटेंड करें तो फ्री है ना, ये तो ट्रायल ही हो गया। अगर आपने यहां से कुछ भी सीखा तो समझ आइए आप सीख रहे। सो ईएमआई ऑप्शन, विश्वास जी यहां जाके आप ईएमआई सिलेक्ट कर सकते हैं। ईएमआई का ऑप्शन है 1328 पर मंथ की ईएमआई क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। इतना कम तो हम यार, एक बार की मूवी टिकट अगर जाते हैं ना, पॉपकॉर्न का प्राइस आजकल 500 रुपीज है पीवीआर में। मैं ये नहीं कह रहा पीवीआर का स्टॉक लो, लेकिन पॉपकॉर्न का प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। अब्दुल, आपको एक इंडिकेटर का एक्सेस, आपने फॉर्म फिल किया क्या? मेरी कलीग हेल्प करेगी आपको। आपका डिटेल शेयर कर दीजिए। यू हैव रजिस्टर्ड फॉर इट, डू नॉट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। आपका नंबर ड्रॉप करिए, माय टीम इज गोइंग टू हेल्प यू आउट विद द एक्सेस अगर कुछ भी है। रघुनाथ का आ चुका है। और कौन कौन है यहाँ पर? आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी क्विक पोल ऑल्सो राइट नाउ। Who all are here to take that step forward? Which path to financial freedom I am asking?
टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड, कौन कौन है जो यहाँ पर जुड़ना चाहता है मेरे साथ में टू लर्न दिस साइंस? आई गो बैक टू माई पीपीटी ओवर हियर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मैंने स्क्रीन दूसरी वाली शेयर कर दी यहाँ पर। ओके, सो ये सारी चीजें मिलेगी आपको। साथ ही में देर इज अ क्वेश्चन हियर, विच इज अ बेटर कोर्स टू टेक। देखिए, मैं बहुत ही क्लियरली बता रहा हूं। विश्वनाथ का भी रजिस्ट्रेशन हो गया, कंफर्मेशन डाल दीजिए। शिक्षा आपका नो प्रॉब्लम। आपका त्रिशूल रजिस्ट्रेशन हो चुका है क्या? तो कंफर्मेशन एक कर दीजिए। जो आपको एक ही इंडिकेटर मिलेगा वो ट्रेडिंग व्यू पे अप्लाई होगा, बिल्कुल। आ, ब्रह्मास्त्र बाद में नहीं करना, अगर आपको ब्रह्मास्त्र करना है तो अब भी करना होगा। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र राइट नाउ। वंस यू आर अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र, यू आर अ पार्ट ऑफ त्रिशूल। आपको अलग से त्रिशूल रजिस्टर नहीं करना। सर, ब्रह्मास्त्र के लिए रजिस्टर करना है, कैसे करें? लिंक अभी जो मैं आपके साथ में वापस से शेयर कर रहा हूं। डायरेक्टर साहब, तीनों लिंक शेयर करेंगे क्या? सभी के साथ में ईएमआई की लिंक, बीएमडब्ल्यू ऑफर लिंक और वो लिंक जिससे वो कर पाए। ओके, यहां पर फैंटास्टिक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपने रजिस्टर कर दिया है, बहुत सारी चीजें लवली। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ शीतल भी आ चुकी है, और कौन कौन है जो रुका हुआ है मैं यहाँ पे पोल भी ले रहा हूँ, पोल में पार्टिसिपेट करते जाइए जो जो यहाँ पर रुके हुए। 32,000 प्लस जीएसटी है, 37,700 की फीस आएगी विथ इंक्लूडिंग जीएसटी। आप कौन से लिंक पे देख रहे हैं? यहां पर आपको जाके देखना होगा उमेश, लिंक मैंने आपको बताई है, वंस यू गो दैट। ओके, आप कर्नाटका से, फैंटास्टिक, बहुत सारे जन पीपल आर ज्वाइनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। देयर आर पीपल फ्रॉम सिंगापुर, पीपल ज्वाइन फ्रॉम इंडिया, वेरियस प्लेसेस आल्सो। सो लिंक यहां पर है, मैं भी सभी के साथ शेयर कर देता हूं। पीपल हु आर देयर ऑन यूट्यूब, इफ यू हैव क्वेरीज और डाउट्स यू कैन आल्सो आस्क मी। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर मैंने पोस्ट किया है वेरी क्लियरली। एंड 10K का टोकन है, आप पे कर सकते हो, ईएमआई से वहां से पे कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू आपको नहीं बाय करना है। टाइमिंग्स 10 to 4 है मेहुल, टाइमिंग्स 10 to 4 है, लाइव होगा। लेकिन उसमें मैं आपको थियरी भी सिखाऊंगा, वीडियोस भी होंगे, और साथ में प्रैक्टिकली एप्लीकेशन दिखाऊंगा। ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन होगी, मैं अभी से बता रहा हूं आपको। विश्वनाथ जी, जस्ट गिव मी सम टाइम, मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। ओके, यहाँ पर एक और चीज है, देर इज अ क्वेरी फ्रॉम सर, आई एम ऑलरेडी नोइंग Elliott Wave, shall I be a part of Neo Wave? Yes, you can be a part of Neo Wave, of course, because that's different. And यहाँ पर okay, there is another question here. मेहुल, आपको मिला क्या? यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र और त्रिशूल प्रोग्राम, कंप्लीटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू इट। आई विल बी यूजिंग विच प्लेटफॉर्म? आई विल बी यूजिंग ट्रेडिंग व्यू एंड गो चार्टिंग अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। सो आई विल बी यूजिंग दोस प्लेटफॉर्म, रफीक। ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन कौन यहाँ पे बचा हुआ है अभी मेरे पास? फटाफट से कंफर्मेशन दीजिए, कौन कौन रुका हुआ है अभी तक? जतिन, अभिजीत, अजय, आनंद, अंजलि, आप लोग रुके हुए क्यों? अरविंद, अरविंद, भरत, ज्वाइन करिए, गुरुकुल में जुड़िए। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग लर्निंग। Sir, can I apply it in crypto and forex market? Yes, this combination of Elliott Wave, Neo Wave can be applied on commodity, forex, stocks पे भी apply कर सकते हो। Sir, how do we select stocks using wave theory? Wave theory use करके stock select नहीं करना है। Wave theory में आपको जो अगर stock select करना है, सिंपल है, सिंपल एक साइंस देता हूं सभी के लिए। अगर आपको stock selection करना है, simply look at it, what is the leader today? कौन सा सेक्टर लीड कर रहा है, वो सेक्टर में से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिए, सेक्टर को लीडर, क्योंकि जो खिलाड़ी नंबर 1 जीता हो इतने बार, आई हैव यूज्ड दोस मेथड्स। आइडेंटिफाई करिए। जसपाल, हितेश, आप जुड़ चुके हैं, एक कंफर्मेशन डालते जाइए। महेश, मेघ, मेहुल, एवरी वन ऑफ यू एक कंफर्मेशन डालते जाइए। डोंट वरी रंगुनाथ, ये सारी चीजें करेंगे। एलियट एंड नियो वेव वर्क टुडे, फैंटास्टिक, ग्लैड टू नो दैट। सुटेबल फॉर यू मेहुल, जैसे मैंने कहा था, ब्रह्मास्त्र जुड़ सकते हैं या त्रिशूल जुड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। त्रिशूल जुड़ रहे तो यू लर्न अबाउट टाइम साइकिल्स, यू लर्न अबाउट एवरीथिंग दैट आई नो इन दिस पीरियड ऑफ 15 years of my experience, 20 years rather, because 5 साल तो स्ट्रगलिंग था, इसलिए 15 years ऑफ सक्सेसफुल था। तो 20 years का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा आपके साथ। यहाँ पर महेश आ चुके हैं। देन देर इज अनदर क्वेश्चन, सर, विल आई गेट दी एक्सेस टू ऑप्शंस मंत्रा राइट नाउ? यस, ऑप्शंस मंत्रा मेरी टीम चेक करके आपको दे देगी।
सर हाउ डू आई गेट दी एक्सेस टू निफ्टी रिसर्च? हाँ, ये जो 251 रुपीज आपको पे करना है आफ्टर यू पे दी त्रिशूल मेंबरशिप के लिए आपको 251 पे करना होगा। वो मेंबरशिप में आपको निफ्टी रिसर्च 3 मंथ्स की, एक इंडिकेटर 3 मंथ्स का, ये सारे मिलेंगे। उसके लिए आपको एक फॉर्म आएगा, वो फिल करना है। माय टीम विल गाइड यू। अलग से 251 एडिशनल है बिकॉज वी वांट टू कीप एडवाइजरी सेपरेट एंड ट्रेनिंग सेपरेट। लर्निंग इज अबाउट व्हाट आई एम टीचिंग यू। एंड प्लीज रिमेंबर गाइस, बिफोर you join, I'm requesting every one of you, there is no 100% guarantee. It's a science of probability, and it's learning, it's education, it's investment in yourself. अगर आप आ रहे कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कल ये बाय करो परसों ये सेल करो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आई एम ओनली गोइंग टू एम्पावर यू। आई एम गोइंग टू मेक यू अ फाइनेस्ट ट्रेडर इफ यू फॉलो व्हाट आई टीच यू विद डिसिप्लिन। कौन कौन है यहां पे जो सीखने के लिए रेडी है एंड डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए रेडी है? वो जुड़ जाइए और मुझे बताइए। ओके, ओके। यहां से रघुनाथ, आपको वो 251, अगर आपको निफ्टी की जो रिसर्च है वो मॉर्निंग में पब्लिश होती है, वो 251 आपको अलग से पे करना है उसके लिए। विथ AK इंडिकेटर वर्क्स वेल, ऑल लर्निंग ऑल दिस थिंग्स इज रियली नेसेसरी। क्लासिक क्वेश्चन भरत, कंप्लीटली। अगर AK इंडिकेटर ही काम कर रहा है, AK इंडिकेटर इज आशीष क्याल इंडिकेटर ही काम कर रहा है, तो सीखना जरूरी है क्या? एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं जस्ट। अगर आप स्किल्स है और सिखाने वाला है जो आपको फरारी बनाना जाना बता सकता है कि कैसे फरारी बनती है, डोंट यू वांट टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड एंड प्लंज टू सी हाउ इज इट मेड, एंड देन योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस विल बी ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट। डू यू एग्री विथ मी? If you know how the engine works and then you drive Ferrari, it's a complete different experience. AK indicator is a Ferrari. How is the engine made? Is who makes Ferrari. So that's how it is. दूसरी चीज मैं आपको बताना पूछना चाहता हूं, there is creator and there is a creation. Creator is someone who created everything. There is a creation, including us, nature, trees, everything is creation. I can just be here and enjoy the creation, live blissfully, and go. Or I can strive to know about the creator. Now it's up to you. If you strive to know about the creator, you can go places. But if you simply enjoy the creation, nothing wrong about it. You just enjoy it. You live happily, blissfully, and go. It's your choice. Okay, fantastic. So, does it answer your question? It works, is what I want to say you. People who are there on YouTube, are you there still with me on YouTube? कि आप लोग है नहीं है, थोड़ा सा कुछ बताइए, मुझे पता तो चले आप लोग हो वहां पर। ओके, आप लोग हो, फैंटास्टिक। देयर आर अदर क्वेश्चंस व्हिच आर पॉपिंग अप। इट्स ओके, उमेश आ चुके यहाँ पर, उमेश जुड़ चुके, फैंटास्टिक, ग्लैड टू नो दैट। आप भी आ चुके, रवि जुड़ चुके, लवली टू हैव यू आल्सो हियर, मेहुल आ चुके, सुपर। विश्वास जी, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, माय टीम विल हेल्प यू आउट विद दैट। देयर इज अनदर वन ओवर हियर, आई कैन सी रिंकू जुड़ चुके, ग्लैड टू हैव यू हियर। बहुत सारे जन जुड़ रहे हैं। डायरेक्टर साहब नोट करना, लिमिटेड सीट्स लेनी है भाई, क्योंकि वी आई वांट टू बी एबल टू आंसर एवरीवन ओवर द सेशन, सो एंश्योर ओनली लिमिटेड पीपल आर ज्वाइनिंग। योगेश, फैंटास्टिक। जो रुके हुए कौन कौन है? योगेश, आप रुके क्यों अभी तक? सुधीर, सतीश, संतोष, जुड़िए ना। रूपा, रोहित, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। ऋषि, टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। लर्निंग में इन्वेस्ट करना। सी, आई हैव अ रिसोर्ट इन लोनाला। इफ आई वुडंट हैव बीन, लॉकडाउन था 2020 में, you know, if I wouldn't have been a trader or a mentor, I wouldn't have been able to survive. But just because I'm passionate about it, I created my parallel sources. I was not worried. Lockdown यार बहुत बड़ी चीज थी, and resort है, so you don't have to really bother and worry about it. राम, राजीव, आप जुड़ चुके तो कंफर्मेशन डालते जाइए। पिंकू, प्रशांत, रत्निक, फटाफट से जो यहां पर जुड़ते जा रहे, चैट पे कंफर्मेशन भेजते जाइए सो दैट आई एम एबल टू सी कौन कौन है यहां पर। महेश, फैंटास्टिक, बिल्कुल, यहां पर आपको क्वेरी आंसर हो गई। लवली गाइस, आई थिंक शिक्षा, confusion for trading, clear my confusion of trading. I took 3
बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, समझना है, सीखना है, क्लैरिटी लानी है। कंफ्यूजन होगा तो ऑलरेडी मार्केट कंफ्यूज करता है, सीख के और कंफ्यूजन क्यों करे। इट हैज टू बी वंडरफुल, इट हैज टू बी लवली। चलिए, बहुत बहुत फैंटास्टिक गाइस। आई थिंक बहुत सारे जन जुड़े हैं, बहुत सारे जन अगर जुड़ सकते हैं, अगर सीट्स ओपन होगी तो आप पेमेंट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लिंक्स आपके साथ शेयर हो चुकी है। इट्स ऑलवेज वंडरफुल, इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक। एंड यहाँ पर आई एम जस्ट गोइंग टू tell you very quickly, investment in market is risky. Ensure that you are ये QR कोड भी मैं शेयर कर रहा हूँ, QR कोड आप ले सकते हो। once you have the QR code, so just ensure you can scan it and keep it with you. uh, just a disclosure, we are SEBI registered research analyst. Whatever I'm doing here is purely from learning perspective. Disclaimer, guys. And investment is risky. There is no guarantee. Please understand that. Learn it. Trade systematically. Become a disciplined trader. Understand the risk and do that. And it will work for you. It works for me. It will work for every one of you. Thank you very much for joining me, listening me out. And I only wish you learn this science so that you know it's powerful Ferrari, which I am teaching you how to make. Thank you very much. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.